कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आपने सर ये जो डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल है इसमें सारे बच्चों को इस प्रकार से सींचने का काम किए हैं कि किसी भी बच्चा से हम इवन मिलें तो उनसे पता चलता है कि आखिर इतने कम दिनों में इतना सारा चेंजेज इनकी लाइफ में हुआ है, तो यकीन मानिए कि इतने सारे दिनों जो अभी बचा हुआ है उन सारे वर्षों में वो कितना आगे तक जा सकता है। इसके लिए आपने अपने डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल में सर किस प्रकार से फ्यूचर को डिसाइड किया हुआ है? यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में आपका बहुत सारे फ्यूचर इस तरह का रखे हैं जो अदर बोर्डिंग स्कूल में नहीं है, तो यहां से बच्चों के अंदर वो क्वालिटी डेवलप कैसे कर पाते हैं और बच्चों के बेस जो है, फाउंडेशन जो है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं सर? अभी आप डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, जहां से आपने समाज में परिवर्तन लाने की जो है विचार अपने मन में जगाया और उन सारे चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। सर आखिर आपके मन में ये विचार कैसे आया कि वैसे लोगों के जिंदगी में भी प्रकाश लाने हैं जो अपने लाइफ में बड़े स्कूल या बड़े बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं? मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। सर आपका जो बुक है, दोनों बुक वो अमेजोन पर भी अवेलेबल है, उस विषय पर क्या कहिएगा? सर ब्लड हेवन जो आपका बुक है, वो बुक आखिरकार ये समाज को क्या मैसेज देना चाहता है? That dreamers may die, but their dreams never die. You know, that's what I feel like. Like, suppose if I am dreaming today, and if that dream has some vision, if that dream has some solidity in it, I may die tomorrow, but that dream will keep on traveling from one generation to another generation. सर आपने बताया कि हम यहाँ पे बच्चों को आईएएस ऑफिसर तो नहीं बनाते हैं, इंजीनियर तो नहीं बनाते हैं, लेकिन उनके जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको मजबूत कर देते हैं। और आप सभी जानते भी होंगे कि जिस बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है वो बिल्डिंग वर्षों वर्षों तक टिका रहता है, आंधी तूफान सभी को झेल सकता है। इसी प्रकार से जिस पेड़ के जड़ें जितने मजबूत होते हैं वो पेड़ उतना ही मजबूती के साथ खड़ा होता है। तो बच्चों का जो भविष्य है वो डिपेंड करता है कि उसका फाउंडेशन किस प्रकार से है, बेस किस प्रकार से है। बेसिक यदि मजबूत हो जाता है तो आने वाले दिनों में सिर्फ आईएएस ही नहीं, वो जो बनना चाहता है वो आसानी से बन जाता है। तो आपने जो ये बात बताया सर कि हम फाउंडेशन पर काम करते हैं, बेसिक को मजबूत करने का प्रयास करते हैं ताकि आगे आने वाले लाइफ में वो अपने सारे स्ट्रगल को फेस कर सके। सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वैसे लोगों को जो कोई बोर्डिंग स्कूल के तलाश में है, उनको आप क्या कहिएगा? सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल में हैं और हमारे साथ आज विशेष रूप से बात करने के लिए उपस्थित हैं डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर राजेश कुमार। तो आज हम विशेष बात करेंगे, उससे पहले बस यही कहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं राजेश सर से कि इन्होंने अपने ही जिंदगी में इतने सारे एफर्ट को झेलते हुए, इतने सारे मुश्किलों का सामना करते हुए आज इस पोजीशन पर हैं। इनसे हम ये राज जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सर सबसे पहले आपका सफर नया भारत में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आनंद जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आप इतने कम एज में ही इतना सारा कुछ कर पाए हैं? Well, I believe it's all about the blessing of the people and Almighty Lord, everybody who's been involved in my journey all through. Yeah. सर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप समरी में बता दीजिए कि आपका स्ट्रगल का स्टोरी क्या रहा है अभी तक। Well, I don't call my journey any sort of a struggle. However, I'll tell you one thing that I always believe in one particular quotation which I generated, I guess some years back in my book.
that dreamers may die, but their dreams never die. That's what I feel like. Like, suppose if I am dreaming today, and if that dream has some vision, if that dream has some solidity in it, I may die tomorrow, but that dream will keep on traveling from one generation to another generation. That is my vision. Well, सर आपका अभी ही कुछ दिनों पहले एक बुक पब्लिश हुआ है कनाडा से, सर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? yeah, actually, my latest book is this Blood Heaven, which has been published by Ukito Publishing. It is one of the finest publishing houses from Canada. Well, although I had been writing that book for over some period of time, however, this Corona tenor helped me a lot. Like whatever amount of time I was, occupied with, I happened to bring in this particular idea that I should inculcate it for my creativity. Although I had already written my first book, Flowers in Search of Fragrance, which is again an anthology of poetry, it's a collection of poetry normally. However, I wanted to write something for the mass, like something that everybody can connect with, like for general people. And in the meantime, I had some ideas as well. Well, so I formulated the entire, perception, and finally attempted to give it a formation of a book. Well, the writing part didn't take so much of time. I finished my entire writing part, I guess, in just a year or maybe less than that. However, this editing part, that was something which is always a consuming job. It takes so much of effort. Like I remember this complete editing took me approximately 1.5 years, something like that. And even now also, even when the book is published, I happen to see that everything is all fine. So finally, I guess Ukito Publishing was the first publishing house where I submitted my book, and just luckily it got published. They liked the entire projection and they published it. सर ब्लड हेवन जो आपका बुक है, वो बुक आखिरकार ये समाज को क्या मैसेज देना चाहता है? Well, the only message which I wanted to give through this Blood Heaven, although it's a romantic thriller and it is completely based on a lot many aspects which I myself happen to observe and notice. However, I would say that broadly it is based on an incident which occurred in Kerala. Some case was there, some controversial case was there, and it occurred, I guess, some 5 years back. So this novel is broadly based on that, but the message which I believe this book is attempting to offer and impart at its disposal is like, no matter how hard is your life, you should always keep on going, and feeling, I believe the heart sees farther and deeper than the eyes. The eyes see till a limit, but if you have a golden heart, it has different sort of vision. It can see even beyond that. So that novel is basically a journey of a character who normally comes across a lot many challenges, adversities, so many adventures, but he does not give up on his feelings. He doesn't give up on his dreams, and ultimately he turns out to be a fine a performer in terms of life as well as otherwise, I believe. होता ये है कि बहुत सारे लोग अपने सफ़र को शुरू करते हैं, और सर ने भी बताया कि बहुत सारे मुश्किलों में टूट जाते हैं, मुश्किलों में गिर जाते हैं, हार जाते हैं और असफल हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर ने उन सारे चीज़ों को उस बुक में समराइज करने का प्रयास किए हैं। इसीलिए सर भी कहते हैं कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। सर आपका जो बुक है, दोनों बुक, वो अमेजोन पर भी अवेलेबल है, उस विषय पर क्या कहिएगा? वेल, so far so well, like whatever initial reports I have been receiving from Amazon and Flipkart, it is overwhelming. Like my first book was basically published by this Authors Press New Delhi, which is one of the finest publishing centers over there for poetry. A lot many poets have won some of the prestigious awards from that particular press, I believe. Well, that was my first book from Authors Press New Delhi. Later on, however, that book was like the press also, they contributed, and I had to also support a bit financially. But this book
which came through Occulto Publishing, it is completely traditional. Like they invested everything. I didn't have to invest even a single penny. Well, so getting into traditional publishing house itself, I believe, is a challenging job today when you have more writers than readers. Therefore, I feel overwhelmed with the response, with the kind of acceptance I have got over the period of time. I feel overwhelmed. And apart from that, I also feel that I should write more. And writing is a process that never ends. Yeah. Writing is a process which is directly linked with your emotion. It's directly linked with your feeling. And I believe feeling itself is a journey. It goes away. It goes on even after you depart. Therefore, I just feel and I dream, I aspire to write more and more books. I aspire to bring about all my feelings, all sorts of emotions that I normally carry in my heart. चले, बहुत अच्छा है। ये सारा जो दोनों बुक है सर का, वो अमेजोन पर भी आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि अभी आप डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, जहां से आपने समाज में परिवर्तन लाने की जो है विचार अपने मन में जगाया और उन सारे चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। सर, आखिर आपके मन में ये विचार कैसे आया कि वैसे लोगों के जिंदगी में भी प्रकाश लाने हैं जो अपने लाइफ में बड़े स्कूल या बड़े बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं? See, I have been teaching, have been learning, have been studying in Hazaribagh for over a long period of time. I remember, although I was born around Barhi, but I believe this is my birthplace. Why? Because I have been over here since the day I started looking at things, well enough. So, being over here, what I personally felt that most of the people who actually turn out Hazaribagh like Hazaribagh, they are from rural areas basically. Yeah. They come from the countryside areas. Hardly you will find anybody who is a local. Otherwise, you will see that this entire place is occupied by the people from outside. Well, so while teaching, while learning, I kind of felt somewhere, I believe some 3-4 years back, although I taught in some residential school as well, like DPS and all. So what I felt that we have been thinking a lot, or probably the people of this town, they have a lot many opportunities that they can get into Holy Cross, they can get into St. Xavier's. But how about those students who come from rural areas? Do they not have that dream in their heart? Are they not passionate enough? Are they not energetic enough? Or do they not have that resonance? They have everything. But the only complexity with them is that they don't have that accessibility of education. That all those students who come from those areas, of course, they are financially so much trodden. But I never wanted this financial complexity to come in between and, just somehow or other, how hinder their dream, hinder their journey. Therefore, my entire objective was to give them that atmosphere which they actually deserve at the lowest cost possible. Of course, I love the children of our town, and more or less, I have been also a town boy right since the beginning. However, I've been always concerned, like most of my friends, they came from a lot many, other areas as well. And frequently I happen to come across a lot many people who go on complaining, sir, just, we are unable to educate our children just because we don't have that accessibility to accommodation, to finance, or for 1000 reasons here and there, somehow or other, how the real stream, the main community of students, I believe, is remaining deprived of that. Well, keeping that in my concern, I wanted to do something like I'll charge the minimum possible from them and will, educate them and will offer them all such etiquettes, will offer them all such elements of education, all such components of education, which I believe can at least build their foundation. Well, when you send your child to any school, you don't need to make him an IAS officer right there. For IAS coaching or for engineering coaching or, MBBS studies, we have a lot many other platforms. So school, when we talk about a school, we talk about foundational knowledge. Yeah. We talk about basic knowledge. We talk about basic etiquettes, basic character building.
Well, that is what I have been trying to do over here at Deregio boarding school at the minimum cost possible. And the reason behind is very simple, that every child from every corner of Jharkhand can easily get in touch with us. Or why Jharkhand? Anybody, wherever he or she feels like to get in touch from, you know. So that is my basic objective. Well, of course, I need to manage a lot many staff over here, a lot many people. So for that, I need to charge something. Otherwise, my objective was to just give them free education, you know. But still, this is my wish, this is my aspiration, that I want to distribute, just share education, want to educate all those people who I believe they hoist the flag of our coming India. सर, वैसे चिल्ड्रेंस जो कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज हाउस में वर्ण किए हैं, जन्म लिए हैं, उनको आप सींचने का काम कर रहे हैं और बेहतर एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में आपका बहुत सारे फ्यूचर इस तरह का रखे हैं जो अदर बोर्डिंग स्कूल में नहीं है। तो यहाँ से बच्चों के अंदर वो क्वालिटी डेवलप कैसे कर पाते हैं और बच्चों के बेस जो है, फाउंडेशन जो है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं सर? वेल, as you mentioned that we have inculcated almost all sorts of facilities, but the point is that at the minimum cost possible. Suppose today if you try and get into any boarding school, they'll cost you like anything. Well, they have got like their sky touching building and all those things. Well, I believe if you really and genuinely want to educate a child, you can educate him in a simple room also, the way Mr. Anand Kumar did in Super 30. Well, that is my basic vision. So to educate a child, you don't need so much of gold and glory. You don't need so much of show and fame and all those aspects that can attract the eyes. All you need is a terrific faculty unit. You need some basic whatever amenities you may say, and thereafter you can simply distribute your education. You can channelize that in a very prolific manner. सर, आपने बताया कि हम यहाँ पे बच्चों को आईएएस ऑफिसर तो नहीं बनाते हैं, इंजीनियर तो नहीं बनाते हैं, लेकिन उनके जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको मजबूत कर देते हैं। और आप सभी जानते भी होंगे कि जिस बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है वो बिल्डिंग वर्षों वर्षों तक टिका रहता है, आंधी तूफान सभी को झेल सकता है। इसी प्रकार से जिस पेड़ के जड़ें जितने मजबूत होते हैं वो पेड़ उतना ही मजबूती के साथ खड़ा होता है। तो बच्चों का जो भविष्य है वो डिपेंड करता है कि उसका फाउंडेशन किस प्रकार से है, बेस किस प्रकार से है। बेसिक यदि मजबूत हो जाता है तो आने वाले दिनों में सिर्फ आईएएस ही नहीं, वो जो बनना चाहता है वो आसानी से बन जाता है। तो आपने जो ये बात बताया सर कि हम फाउंडेशन पर काम करते हैं, बेसिक को मजबूत करने का प्रयास करते हैं ताकि आगे आने वाले लाइफ में वो अपने सारे स्ट्रगल को फेस कर सके। सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वैसे लोगों को जो कोई बोर्डिंग स्कूल के तलाश में है, उनको आप क्या कहिएगा? वेल, दे आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर. If they really want to get some fantastic foundational education with so much of care, affection, they are most welcome. We are always available over here. And most importantly, I have got a fantastic, as I have already mentioned, unit of faculty members. They work day in and day out to make sure that the children improve a lot. Well, most of the children who came just because we started off couple of months back, so most of the children, they came from various nooks and corner. Like the condition was terrible. Like our teachers were not they were not in the mood to get them enrolled over here. But then I said that is the challenge. If you are turning gold into diamond, or if you are turning silver into gold, that's not a big challenge. The challenge is to turn garbage into gold. When you're turning garbage into gold, the challenge is there actually. You need lots of effort, you need lots of vision, you need lots of patience, perseverance. Well, that is what I have been trying to do over here. And, by His grace, hopefully lots of people will join me, or even we have just a handful of people. I'll try and build them as much as possible for a better projection. आपने सर ये जो डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल है इसमें सारे बच्चों को इस प्रकार से सींचने का काम किए हैं कि किसी भी बच्चा से हम इवन मिलें तो उनसे पता चलता है कि आखिर इतने कम दिनों में इतना सारा चेंजेज इनकी लाइफ में हुआ है। तो यकीन मानिए कि इतने सारे दिनों जो अभी बचा हुआ है उन सारे वर्षों में वो कितना आगे तक जा सकता है। इसके लिए आपने अपने डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल में सर किस प्रकार से फ्यूचर को डिसाइड किया हुआ है? वेल, सी,
fundamentally we focus on the basics of children, like when they come from all those rural sectors. Our first objective is to polish their language, polish their personality, and give them at least some basic elements about almost every subject. See, it's not possible that every teacher or every student should know everything, not possible, but whatever basic elements are there, we always give proper emphasis upon that. That suppose when I'm talking about English, or for that matter grammar, at least our children should know parts of a speech in a well prolific manner. When we talk about adjective, they should produce some examples instead of simply giving definition. Say suppose when we talk about science, they should know what exactly is photosynthesis. When we talk about maths and we give them some calculation, multiplication, fraction, whatever, they should do it in the mind itself. So that is my vision, that we need to solidify at least this content properly in the children. After that, they will find their own ways everywhere. Like Rabindranath Tagore also said once very proficiently, that children are like climbers. They are like climbers. You simply need to show them their way. They'll automatically go up and will find their roots. That is what we are trying to do over here. And the faculty members, whatever we have, they are extremely well trained and well mannered, well committed. Whatever people we have, and most of them, they are my own friends. To be very frank, they are my own friends. Otherwise, people normally don't like to join anybody on a new journey. But I am quite indebted to all of them that they have joined me at a very initial stage of my life. And besides that, whatever amenities, facilities we have at this hostel, we focus on healthy and hygienic food and environment. We don't allow a lot many children to get admitted. We have less children, but we make sure that whatever children are there, they should be educated well enough. Otherwise, when you have crowd, you start simply distributing things in any manner possible. We want quality. We don't want quantity much, not at all. Whatever children we have, we make sure that every child gets personal attention and individual awareness. सर का भी मोटिव यही है कि हम ज़्यादा क्राउड नहीं चाहते हैं, लेकिन वैसे ही लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं जो आने वाले दिनों में कुछ बेहतर कर सके। इसीलिए विवेकानंद का कोट्स भी है कि जो जैसा सोचता है और जो जैसा करता है और जो जिस माहौल में रहता है उसी के जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे बेहतर माहौल दिया जाता है ताकि आपके बच्चे आने वाले दिनों में कुछ बेहतर कर सके और बेहतर माहौल के साथ अपने आप को उस तरह से बना सके ताकि आने वाले फ्यूचर को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जा सके। तो आज राजेश सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और इनका जो गोल है, इनका जो मोटिव है, इनका जो मकसद है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, जिन्होंने इस समाज को चेंज करने का प्रयास उस बच्चे से शुरू किया जो शुरू से ही यदि बदल जाए तो समाज ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो आज के इस सफर में बस इतना ही। हम अगले किसी सेशन में बात करेंगे कि आखिर डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल किस प्रकार से रनिंग कर रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला है। तो सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी यहां से देख पाएं और जान पाएं कि डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल हमेशा से तत्पर है बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए।